नमस्कार बंधुगण, आज एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही प्लस टू प्रैक्टिकल परीक्षा केबे हेबो तार देखा कौन रही चिठी आसी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा CHEC रो चिठी आसी लेटर नंबर 5053 डेट अच्छी 7/11/2024 फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस CHEC ओडिशा भुवनेश्वर to the principals, headmasters, headmistress, center superintendent of all institutions affiliated to the CHEC. Conduct of practical examination of the annual higher secondary examination 2025. Arrangement and instruction thereof. Madam and sir, this is for your kind information that the practical examinations for different subjects, papers, arts, science, commerce and vocational streams of the annual higher secondary examination 2025 are scheduled to be held between 2/1/2025 to 12/1/2025 in all affiliated institutions of the CHEC having practical components. You are therefore requested to go through the instruction for conduct of practical examinations appended with this letter and make necessary arrangements for smooth conduct of practical examination. तेणु एक गुरुत्वपूर्ण चिठी रही समस्त कॉलेज रो प्लस टू कॉलेज रे पढ़ुवा छात्र छात्री मान जो प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने जो मानकर बोर्ड परीक्षा हेबाकू जाउछि सेमानकर प्रैक्टिकल परीक्षा आसंता 2025 मसीहा जनवरी मास 2 तारिख रु आरंभ हेबो एवं 12 तारिख रे सरीबो। तेणु 2 रु 12 तारिख भितर सेमानकर प्रैक्टिकल परीक्षा निज कॉलेज रे अनुष्ठित हेबा पई जाउछि। तेणु छात्र छात्री मानक पई ଏହା ଏକ निश्चित गुरुत्वपूर्ण चिठी रही समस्त छात्र छात्री माने वर्तमान पाखरु निजर प्रैक्टिकल परीक्षा पई एवं बोर्ड परीक्षा पई प्रस्तुत होई जांतु मन दे पाठ पढंतु एवं प्रैक्टिकल रे फॉलो करिवे बोली मोर आशा एवं विश्वास। तो गुरुत्वपूर्ण चिठी रही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक रही फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन to all district education officer of the state Odisha, deputation of master trainers on the day of monthly head teachers meeting for the month of November 2024 at the block level to impart orientation on digital assessment of secondary school to all the HMs of recognized high schools of the block. तो एटा हाई स्कूल पाई रही चिठी तो डेपुटेशन होबा मास्टर ट्रेनर तो जो डिजिटल टीचिंग पाई प्रत्येक हेडमास्टर को डिजिटल केमितिका माने फॉर्म फिलअप करेंगे मैट्रिक रो फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन रे केमती काम करेंगे से संपर्क रे एक ताको ट्रेनिंग दिया जीवो। कौन रही मैडम एंड सर इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above I am directed to state that BSc Odisha has already imparted orientation on digital assessment of secondary schools to all 314 numbers of master trainers, one per block from 28/10/2024 to 30/10/2024. The same training needs to be imparted to all the headmistresses of the blocks by the concerned master trainers to serve the actual purpose of the orientation program, as filling of forms by class X students for AHSC examination 2025 has already been started. It is high time to orient the headmistress of all the high schools recognized by BSc Odisha to make it accurate and error free. Therefore, you are requested to depute the master trainers on the day of monthly head teachers meeting at the block level for the month of November 2024 to impart orientation on digital assessment of secondary schools to the headmistress of all the recognized high schools of the concerned blocks. A write-up on important points of orientation has been prepared and enclosed herewith for the support of the master trainers. तो ये आउ किसी बेसिस किसी नहीं तो 314 जन मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दिया जाइछि। तो से 314 जन ट्रेनर आसी वर्तमान प्रत्येक ब्लॉक रो जने जने आसीबे एवं प्रत्येक ब्लॉक रो जो हेडमास्टर माने रहिछंती हाई स्कूल रो जो हेडमास्टर बा हेड मिस्ट्रेस अछंती से मानकु से माने प्रति ब्लॉक रे जो मीटिंग होबा को जाउछि ब्लॉक स्तरीय मीटिंग से ब्लॉक स्तरीय मीटिंग रे हेडमास्टर एवं हेडमिस्ट्रेस मानकु से मास्टर ट्रेनर माने डिजिटल ऊपर से माने तेमानकु ट्रेनिंग देबे। तो ये चिठा विशेष किछि नाही सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर 32331 चिठी नंबर डेट रही 7/11/2024
all district education officer of the state sanction of the house building advances in favor of the secondary education teachers and other employees of the state. With reference to aforementioned subject, it is stated that a number of house building advance proposals of secondary teachers and other employees, that is group C and D, are being received from different district education officers of the state without adhering guideline as formulated by government in finance department office memorandum 17,000। स्कूल शिक्षकों ପାଇଁ खुशी खबर आनिक घर ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି खुशी खबर ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଜମିରେ ନୂଆ କୋଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଯଦି ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କୋଠା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଏହା ଥିଲା ଏ ଚିଠିର ମୁଖ୍ୟାଂଶ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ବାସଭବନ ଘେରାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।